Assalamu alaikum and a very warm afternoon to another episode of the CxO Global Forums uh, interview. We are today enlightened to have three amazing panelists with us for an enlightening session focusing on thriving in the new world of work, inclusive leadership, change mastery, and organization success. My name is Wardah Falik and I'm a brand lead at Invozone. And to discuss this topic, we are joined today by Ms. Maryam Talal, Head of Human Resource at Invozone, Ms. Malik, Head of Talent Acquisition, People Success, and Cultural Excellence at Datics AI, and Mr. Hassan Raza, Founder and CEO of Techtitans Pakistan. Firstly, thank you very much to all three of you for being a part of this amazing discussion. You all are at the forefront of the change enablement. So let's dive right into the topic. My first question is to all three of you, and that is how does fostering inclusive leadership contribute to an organization's ability to navigate and thrive in times of change? Let's start with Miss Maryam. You. Thank you very much. Um, I would say inclusive leadership has become pretty vital, and especially the generation that we are dealing with. The one thing which is very important is while we talk about inclusive leadership, one thing which is very important is to have diverse perspective um, that help you have the ideas or the innovative ideas to deal with a lot of challenges that you face during the change times. The other thing which I believe is very important for any inclusive leaders that are there, that are dealing with diverse teams, is to articulate that vision that why this change is happening to the team so that they get ready. Unless this idea or this vision is not articulated well, and that means from top to bottom, all the levels, you won't see that sort of outcome that you desire. The desired outcomes won't be there. Another thing that I would really, I'm sorry, you can cut me in if I'm going very long. Sure, sure. You have your time right now. Take All it. right. Another thing which I feel is very important and most of us should practice is to have this sort of a learning environment within a team or the organization so that when it's the time for the change, your team members are equipped well with the skills to deal with those sort of change. So I think pretty much this is what I would like to answer in this question for this question. Moving on towards you, Miss Kavil. Thank you very much for having me, first of all, on this wonderful platform. And thank you very much to having a wonderful panelist with me to sharing the stage as well. I think inclusive leadership started when COVID happens, to be honest. So I think 3 to 4 years before हमें कभी इस चीज का we never thought of to have such kind of environment where we thought of leadership style could be inclusive as well. So this inclusiveness, just for simple terms, I would say is more human centric, and to understand with the empathy to the other side of the table as well. And I think that now is the time where we can give that empowerment to our team leads, team people who are directly working with the teams as well, to directly get in contact with the team members to whom they're working on a daily basis. Secondly, uh, the one thing which was missing previously was a lot of communication, right? Because everybody was into that impression that people are coming to the office, they're meeting with everyone on a daily basis, and they are dealing with the concerns and the daily problems, operation level problems. Uh, on in person as well. So I think, in my opinion, inclusive leadership is all about hearing the voice of people, bringing to a platform where they can feel it's been heard, and giving them that power of empowerment where they can raise their voice and talk for their well-being and for their benefit as well. Moving on to you, Hassan, you have this experience where you meet a lot of people from a lot of industries on pretty much a daily basis. So how would you take this question ahead?
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि. First of all, I would like to thanks to CxO Global Forum. I know it's a great opportunity, and I'm super excited about this session because my three sisters are sitting here. और मेरा काम जरा उन्होंने आसान कर दिया क्योंकि बहुत सारी बातें उन्होंने करती हैं. So I would like to wrap up. So मेरे लिए I think that the most important thing about inclusive leadership is that the positive organizational culture. ये बहुत important है. I mean, in our organization, you know what we do. Our CEOs most of the time they do the micromanagement. They want कि यार हर छोटी चीज भी मुझे पता हो कि क्या है. और भाई अल्लाह ताला की तरफ से ये आपके लिए एक तोहफा है कि बहुत सारी चीजों का आपको नहीं पता होना चाहिए. तो आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन इट. ये इस तरह की सारी चीजें जो है. फिर दूसरा, आई थिंक द फीडबैक मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप एम्प्लॉइज को किस तरह का फीडबैक दे रहे हैं और किसके जरिए दिलवा रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है. आई मीन अगर आप उसको ये कह रहे हैं कि तुम काम ठीक नहीं कर रहे और उसको सोल्यूशन नहीं बता रहे तो इसका मतलब है कि आप रेडी हो जाइए क्योंकि वो एक और जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहा है. आपका लैपटॉप, आपका इंटरनेट, आपका मोबाइल यूज होगा उसकी एक और अपॉर्चुनिटी के लिए. सो मुझे लगता है ये सारी चीजें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं. दैट आई थिंक we need to work on the values, organization values. अक्सर हम values बहुत अच्छी बनाते हैं, respect लिख देते हैं, ownership लिख देते हैं, बहुत सारी चीजें कर देते हैं, but ultimately there is no implementation, there is a zero implementation. So as a leader you have to act like a role model for everyone. आप खाली बातों से act नहीं करें, you need to act कि यार देखो मैंने ऐसे किया है. Then फिर क्या होगा? The people will start following you. आपने अक्सर देखा है कि हम जिनके साथ रहते हैं हम उनके जैसा बनना चाहते हैं. Most of the time we are spending our time in an organization. तो हमारे रोल मॉडल हमारे CEOs, हमारे सीनियर होते हैं. So what we need to do, हमें चाहिए कि अगर हमने as a CEO हम काम कर रहे हैं तो हम लोगों की जिंदगियों में आसानियां बांटें, उनके लिए आसानियां पैदा करें. देन ही हम एक अच्छे लीडर हो सकते हैं. एंड आई थिंक द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लीडरशिप इज आवर प्रॉफिट हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. आई थिंक वो एक बेस्ट एग्जांपल है और उनके सारी चीजें जो हैं वो खत्म होती है. तो मुझे लगता है कि ये इस तरह से अगर हम करेंगे तो और मजीद बेहतर कर सकते हैं. एक और इम्पोर्टेंट थिंग मैं ये चाहूंगा, जितना भी कमल ने और मरियम ने बात की, द डेलीगेशन. आप डेलीगेशन जरूर दें अपने जो नीचे सबऑर्डिनेट्स हैं. इफ यू वांट टू ग्रो देन यू नीड टू हैव. मुझे अक्सर आई स्टिल रिमेंबर दैट माय मेंटर ऑलवेज सेइंग कि देखो हसन, तुमने अपनी जिंदगी आसान करनी है ना तो अपने नीचे जो अपना जूनियर है ना एक बेहतरीन बंदा लेकर आओ और तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा. और मैंने सारी उम्र यही किया है. मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लोगों से हमेशा काम करवाया. एंड यू नो व्हाट, आई रियली लाइक दैट. अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मुझे कोई आके ये कहता है यार देखो तुम्हारा जूनियर जो है ना वो बहुत ही जबरदस्त है. तो मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता, सारे काम उनको करने पड़ते हैं, सैलरी बढ़ती है, सारी चीजें मजे आते हैं, मतलब गाड़ी शाड़ी भी मिल रही है, सारी चीजें. तो आई थिंक दैट कि आपको भी यही स्टाइल जो है ना मैनेजमेंट का ये इंपॉर्टेंट है. एक टाइम पर आके अगर आप सारी चीजें खुद ही करते रहेंगे तो फिर आप ग्रो नहीं कर सकते. सो दिस इज ऑल अबाउट from yourself. Okay, so you talked about leaders and CEOs and CTOs and CFOs, and you are one CEO. You are the CEO and co-founder of Techtitans Pakistan. So how have you harnessed this power of inclusive leadership to drive your own organization? We would love some example from Techtitans itself. Okay, so the first thing is that we are mashallah very good. हमारी टीम वर्क इज वेरी बड़ा जबरदस्त है यहाँ पे. सो फर्स्टली मैंने इनको कहा है कि देयर इज नो हायरार्की. मतलब वो क्योंकि हम लोगों ने रजिस्टर कराई हुई है कंपनी, सो दैट्स व्हाई पीपल कॉल मी कि चीफ, यू नो पीपल लाइक कि यार बड़ी जबरदस्त किस्म की एक डेजिग्नेशन है और इस तरह से बनकर नहीं यार हम एक दूसरे को नाम से बुलाएंगे. तो अब वो क्या करते हैं, मुझे नाम से बुलाते हैं. एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट अभी थोड़े दिन पहले एक साहब आए हुए थे. तो आई वर्कड इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर एज वेल, नाउ आई एम इन आईटी. तो ही सेड कि यार देखो ये तुम्हारे जूनियर तुम्हें नाम से बुला रहे हैं, हसन यार ये तो चीजें ठीक नहीं है. सो एक चीज तो ये है कि मैंने एक अपना बेंचमार्क सेट किया कि मैंने जो है ना वो कोई हायरार्की हमारे नहीं होगी. और दूसरी ओपन कम्युनिकेशन, दिस इज इम्पोर्टेंट.
जिसको कोई प्रॉब्लम है, जिसको कोई इशू है, वो आ सकता है, आके बात कर सकता है, बता सकता है कि इशू क्या है. थर्ड is empathy. The corporate empathy is very important. I still remember जितने लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, मुझे उनके बच्चों के नाम याद है, मुझे ये याद है कि उसकी क्या एजेस हैं, क्या क्या चीजें हैं, तो मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि यार सुनाओ क्या हाल है फातिमा का, सुनाओ क्या हाल है अली का. एंड यू नो वो एक जो फील आता है ना उनको, याद देखो कि यार हमारे जो सीईओ हैं उनको तो मतलब इस तरह से हमारे बच्चों के नाम भी आ रहे हैं. तो उससे कहता हूँ कि देखो यार वो तुम फलान जगह पे तुम्हारी बेटी का प्रॉब्लम हुआ था, अब ठीक हो गया. सो ये जो एरा है, ये एरा ये नहीं है आजकल. जैसे अक्सर मैं अपने शोज में ये कहता हूँ कि यार दिस इज ऑल अबाउट जनरेशन जी. ये इनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है. ये वो वाले लोग नहीं है जो आपकी डांट सुन लेंगे और आप चुप कर जाएंगे. ऐसा नहीं है. ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, ये आहिस्ता से एक्शन लेंगे. देन वी नीड टू वर्क ऑन इट. सो वी नीड टू change with the changing dynamics. I think that. Thank you, Hassan. You talked about people and resources. That's what Kanwal told me the last time I hosted it. So, Kanwal, in the context of talent acquisition, how can inclusive approach enhance an organization's ability to adapt to new challenges and opportunities? That's a wonderful question, Varda. I think जो आपका organization का life cycle है, that starts with talent acquisition. और अगर आपकी inclusivity talent acquisition में नहीं reflect होगी, so that will down the line will affect the overall pillars of the organization as well. So जैसे भी हसन ने कहा कि inclusivity is important at the leadership layer. So my focus and my emphasis will be on that point where the talent acquisition team should be trained enough to understand that whosoever talent they're bringing into the organization are fully equipped and ready to add value into the ecosystem of the organization as well. So how is that going to be happen? Through having certain checklists and assessments through which the talent acquisition team could be able to manage that. So I will just quickly bring it out few points which I have on top of my head at the moment as well. That ऐसा assessment center बनाना चाहिए जिसके अंदर when we'll bring the people in, we are fully confident that they're going to add value into the ecosystem of the organization. How? Are they culturally fit with the organization? Are they well equipped in terms of multiple skill set, not just their own subject matter for which they are currently hiring for? So and then of course the perspective is changing at the moment in across the globe as well, that don't hire people for the experience, hire them for their skills. So I think this kind of skill set would really help the organization to be into multiple shoes and wear multiple hats at multiple challenging situations from within the workforce which they have at this point in time. And secondly, it is very important for the organizations to understand and to give that level of awareness to their talent acquisition teams as well, that adaptability or flexibility का एक element है ना, that has to be there within the organization and the person they're hiring from market as well. Thirdly, employee engagement. I think to involve people at every level in terms of, for example, if I'm hiring a candidate for a certain position because my experience is in tech industry. So if I'm bringing somebody on that point where we are scheduling multiple interviews, doing screening calls, so keep engaging them at every level would really help the organization to build that rapport in the start of the journey of that resource who never been joined yet, right? So I think these kind of small steps could really help the organization to build the overall better system of the organization. And I think another very important thing to understand is that bring people in the organization with multiple skill set. That would help the organization to grow the people from within rather than again going for the same exercise and hiring the new people from outside of the market, which of course it takes a lot of energy and a lot of cost of the HR department at the end of the day. And I think another very important factor which is important here is to connect with the candidate. Inclusive leadership demands that you don't leave the people in isolation. Even if he's a candidate, even if the person is not selected and he's rejected after multiple levels, keep engaging them, keep connecting with them so that they should know what is happening with their application and how far and what are the chances that
the person gets selected or not. So I think that maintaining the human element, that human touch with the prospects, are equally important, even if they don't come on board with you. So that's my stance on that perspective. Okay. On this, let's jump to you, Maryam. We just talked about adding value, employee engagement, fostering connections. So, how do you see the role of inclusive leadership in not only managing change, but also driving a positive transformation across different organizational functions? Right. आई थिंक हसन और कंवल ने काफ़ी अच्छे से अभी तक एक्सप्लेन कर दिया हुआ है इंक्लूसिव लीडरशिप एक तो ये डिमांड है इस टाइम की अभी द वन वी आर लिविंग द एरा in an organization, like Hassan said, okay, there's no hierarchy abhi. Matlab, anybody could approach anybody. Everybody should know everyone. Matlab, that is an inclusive culture that we are trying to build. जब आपका ऐसा कल्चर होता है तो आपके यू हैव डिफरेंट टीम्स डाइवर्स टीम प्रॉब्ली मेरी HR की टीम मार्केटिंग की टीम के साथ बैठ के दे आर ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड फाइंडिंग द सॉल्यूशन यू गेट innovative ideas, you get solutions that you never thought of. It helps you अगर आप इसकी चेंज मैनेजमेंट में बात करें तो it helps you again cope up with a lot of challenges जो आप फोर्सी कर भी रहे थे जो आप फोर्सी नहीं भी कर रहे थे in both the terms. Secondly, आप जब भी चेंज मैनेजमेंट हो रही होती है एंड यू टॉक अबाउट इंक्लूसिव लीडरशिप आपको अपनी टीम्स को थोड़ा इतना स्पेस देना चाहिए जहां दे कुड डू द एक्सपेरिमेंट्स दे शुड बी अलाउड टू मेक मिस्टेक्स दे शुड बी अलाउड टू डू वंडर्स टू and we celebrate both the things chahe it's learning chahe it's a success it's, this is what my idea of inclusive leadership amidst of change और एक चीज़ जो हसन ने भी कंवल ने भी अपने आंसर्स में एड्रेस किया दैट इज ओपन कम्युनिकेशन एंड हैव द एम्पैथी टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द अदर पर्सन sitting or standing in front of you. That is very important. आपके इस पूरे टाइम में what support that you are providing helps a lot, especially the leaders themselves. उनकी support इस पूरे process में helps a lot the team to navigate through whatever changes your organization is going through. So I think overall these are the few things that I feel like an inclusive leader should do when accommodating change within a team or an organization. So right now, all three of you talk about one thing that is common: that foster connections, have empathy, know your candidate, know your people. And the era we're living in right now is the digital era. It's all Gen Z, it's all technology. So how do you think that we can implement this technology in the recruitment process while maintaining that human element and human connection in it as well? And we'll start off with Hassan, you. Hassan? Right, okay, Hassan is having some problem. Let's jump to you, Ms. Kavita. Okay, sure. I think it's good to adopt technology, but to take it very aggressively would not make sense to me because we are dealing with humans at the end of the day, right? So, in my humble opinion, I would say that strategize first, align the needs of the organization with the people whom you're working with. Uh, take along everybody and ensure that whatever you're bringing into the organization at the end of the day the people who have to use them should admit and adhere them by hearts not just by brains, right? So to bring everybody on board with the cause and effectiveness and impact of using the technology and tools are equally important, and taking everybody together on board is equally important as well. And then, secondly, I think using technology in the talent acquisition subject matter is important. Yes, it reduces a lot of stresses and clerical job, that's for sure. But we don't have to forget one thing, that we should not sound robotic. We should not sound as not humans, right? At the end of the day, you're bringing not robots in, you're bringing humans into the organizations who create value into the ecosystem of, again, why I call ecosystem, because that's a complete life cycle, right? So to understand every
robot will never the artificial intelligence is there, consumer behavior is there, that is part of the technology. But what person needs, what empathy is, AI would not tell you. It will tell you in terms of words, but of course to deal with case to case basis would be a different ball game altogether. So I think that's very important, to engage people to whom the technology has to work. And secondly, whatever monotonous tasks, clerical work, you can give it to the technology, please pass it on to that as well. And try to build human connections, try to interact with people as much as we can. And that's bring a lot of synergy into the teams as well, a lot of resilience into the team as well. And that and then the pressure of having that technology and that change would simmer down to that level where everybody would start imagining that we are in the same boat, right? So leadership, inclusive leadership, is not apart from us. We all are together into the same boat, and we have to cross the river together. So again, that's one of the factor which I believe would bring a lot of difference in talent acquisition. And then for example, reaching out to people, drafting a message, you can use technology for that, but customize it to the need of the person is what the human has to understand, and that's only we can do it, not machines can do that, right? So again, that's another factor which I would like to bring into your kind attention. And I think learning and development, you bring tool into the organization, but if you will not make people to train on them, it will be a disaster. So bring technology, bring change into the organization with people who understand it, and then give them time to get hands on into it. So till the time they don't put their hands dirty in the mud, they would not understand how to use it, right? So to take them along into the journey, I think would be a great option to adopt, and to understand by the organization, and specifically the inclusive leadership as well. Thank you. Acha, I have to add one thing here. I'm so sorry to interrupt. Just to sum it up, uh, I think technology should be used to increase the efficiency, not as Wonderful. a replacement of human. That's Absolutely. that's what we need to understand. That I think that's pretty much answers most of the things. Thank Yes. you. Agree. Over बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और ऐसा ही है बट हमारे यहाँ तो जब आई स्टिल रिमेंबर दैट आई वाज वर्किंग विद वन कंपनी एंड वी हैव इंट्रोड्यूस्ड वन सिस्टम ईआरपी सिस्टम एंड पीपल थिंक कि एचआर वाले हमें अब निकालेंगे व्हाट अब ये HR वाले जो है ना मतलब अब ये एचआर वाले जो चाह रहे थे ना कि अप्रेजल ना लगे मतलब ये शीट्स बने अब इस तरह हो गया हालांकि वी आर ब्रिंगिंग द सिस्टम कि अब उनकी जिंदगी आसान हो जाए कोई नई चीज वो सीख लें एंड पीपल ऑलवेज शोइंग द रिलक्टेंसी और फिर वो ऐसा एटीट्यूड कि नहीं हमने नहीं करना ये हमारे में हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपकी जिंदगी आसान करने के लिए है तो आप उसको इस तरह से लें अब जिस तरह कंवल ने और अभी मरियम भी बात कर रही थी वेरी इंपॉर्टेंट जिस तरह अभी हम आप कह रही थी कि ग्लोबल मैं थोड़ा सा क्वेश्चन अगर आप मुझे दोबारा बता सकेंगे वो डिजिटल एज वाला तो उसके ऊपर थोड़ा सा मैं बता दूं थोड़ा सा समझ आया था लेकिन आई कैन रिलेट कि यू कैन आस्क वर्दा अगेन Yes, what we're talking about right now is that you all talk about fostering human relationships, empathy. The question was, how can we incorporate this empathy and human relationship when we're getting the tech and digitalization to the recruitment process? देखिए जी सबसे पहले तो आई थिंक दैट देयर शुड बी अ क्लियर कम्युनिकेशन चैनल्स वो आपके होने चाहिए और वो कौन से होने चाहिए वो आपके ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करे कि क्या हो फिर सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वर्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस ये आपको रखने चाहिए हमारे क्या होता है जो हमारे ये जो लोग हैं ना जो हमारे साथ काम करते हैं डेवलपर्स दे डोंट लाइक लेक्चर्स दे डोंट लाइक वो YouTube पे भी देख लेंगे वो सारी चीजें देख लेंगे वो चाहते हैं कि उनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है ना वो मिलनी चाहिए और द कॉन्सेप्ट इज दैट द फन विद लर्निंग ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो इम्पोर्टेंट है हम क्या करते हैं हम उनको लेक्चर देना शुरू कर देते हैं हम उन्हें कहते हैं कि आप इस तरह से ये सारी चीजें करें और फिर जाके आपको समझ आएगी बट दे सेड यार वी आर लीस्ट बॉदर्ड हम इस तरह इंटरेस्टेड नहीं है और उसके बाद मुझे लगता है फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम क्या करते हैं हम कहते हैं कि देखा 9 to 5 इसी टाइम आना है तुमने खत्म हो गया कोविड अब
देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी। भाई आपको तो अपनी जिंदगी में भी फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। जैसे मैं अपनी मिसेज के सामने बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता हूँ, उनकी हर बात मानता हूँ और उनको नो नहीं करता। फैमिली के सामने आई मीन इट्स फनी थिंग, बट यू नो इट्स थिंग। तो वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल एज ए एम्प्लॉय। आपको लोगों की जिंदगियों में आसानी लेकर आनी है, फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट्स करने हैं। आई स्टिल रिमेंबर दैट कि जब कोविड आया और कोविड के दिनों में लोगों ने, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने यूपीएस, इंटरनेट, हर ये चीज मुहैया करके दी एम्प्लॉयज को कि वो घर बैठ के काम कर सके। और लोगों ने काम करके भी दिखाया। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि वर्क फ्रॉम होम जो है ना, वो वर्क फ्रॉम होम हमारे लिए नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी उस टाइम लोगों ने काम किया। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम में आपको पीछे से आवाजें आ रही होती है ना कि घर से जाके ये भी ले आओ, ये भी रह गया है, फिर काफी चीजें याद आ रही होती हैं। सो हमारे भी कुछ चैलेंजेस हैं एज ए एम्प्लॉय। ये नहीं कि नहीं होते, प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होते हैं, लेकिन वी नीड टू एड्रेस इट कि यार हमने इन चीजों में से चलना है। बिकॉज जहां कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन। सो बीइंग सीईओ, आई ऑलवेज फोकस ऑन द सॉल्यूशन। जब भी कोई एम्प्लॉय आता है और वो कहता है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो आई ऑलवेज आस्क इसका सॉल्यूशन भी मुझे बताओ कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, एंड आई वैल्यू दैट सॉल्यूशन। अगर वो एप्लीकेबल हो सकता है तो हम उसको एप्लीकेबल भी करते हैं। तो आई थिंक ये है। अच्छा, लास्ट में कमल, एक वो लास्ट वाले में जो आप रिक्रूटमेंट वाले में बात करेंगी, जिसकी रिक्रूटमेंट की बात हो रही थी, हम एचआर वालों का ना एक फैक्ट है, एचआर विल गेट बैक टू यू एंड एचआर नेवर गेट बैक। तो जो आप कैंडिडेट्स के साथ आपने जो कम्युनिकेशन रखनी है, वो बहुत अच्छी कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी उसमें होनी चाहिए। मैं आई एम गुड इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, टैलेंट एक्विजिशन में। और दूसरा मेरा मेरा प्लस पॉइंट ये है कि माय नेटवर्किंग स्किल्स आर वेरी गुड। और जो कैंडिडेट्स जो हैं मेरे, वो मेरे दोस्त बन गए। आई स्टिल रिमेंबर एक हम आरओआर की पोजीशन जो है वो कर रहे थे, तो बाट साहब एक थे, तो उन्होंने मुझसे शेयर किया कि यार हसन भाई, ये इस दिन मेरी बर्थडे है। तो मैंने ना नोट कर लिया। वो हमारी डील मेच्योर नहीं हुई, उसके साथ उसको कोई और अपॉर्चुनिटी मिल गई, और उसकी बर्थडे पे मैंने उसको रिमाइंडर मैंने लगाया हुआ था, और मैंने उस बर्थडे वाले दिन उसको मैसेज किया कि हैप्पी बर्थडे। और उसको 2 महीने हो गए थे मुझसे बात किए, मतलब बीच में हम ऑन एंड ऑफ करते थे। एंड ही सेड, सभी आपको याद है? या मुझे तो बिल्कुल याद था। और अगले 6 महीने में उसने मुझे कहा कि इस तरह एक अपॉर्चुनिटी आपने डाली है, तो मैं आना चाहता हूँ। सो एक तो आपको वो रिलेशनशिप उनके साथ मेंटेन करना है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कंटिन्यूअसली आपने उनके साथ रहना है। देखिए भाई, अगर आप एज ए एचआर उनको होली कराएंगे, तो कैंडिडेट्स के पास देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, उनके पास जो है ना वो भरमार होती है, और वो आपके साथ मतलब डिफरेंट चीजें जो है उनके पास है। सो क्लैरिटी इज इम्पोर्टेंट। आप उनके साथ रास्ते में थे। मैं ये कहूंगा कि आपके पास वी आर यूजिंग डिफरेंट एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। पर्सनलाइज कम्युनिकेशन भी जरूर करें। आप उनको प्रॉपर फीडबैक भी जरूर दें। देखिए, हमारे यहाँ लिंक्डइन पे आपको देखते हुए कई पोस्ट लगती है, वो कहते हैं यार हमें जवाब ही नहीं देते। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, रश होता है, हमें हमारे पास ज्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आती है, लेकिन व्हाट वी नीड टू डू, हम आ सकते हैं ना कि देखो जी, कि इसके अंदर तुम्हारा इंटरव्यू में ये ठीक नहीं था, इस तरह की चीजें ठीक है, टेक्निकली तुम्हें प्रॉब्लम था इस तरह से। तो फीडबैक से वो इम्प्रूव करेगा, और उसको लगेगा यार देखो, ये एज ए ऑर्गेनाइजेशन मेरे में पर्सनल इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। तो इट इज ऑल अबाउट। So we just talked about. Do you have something to say, Miss Kawal? Yeah, I was thinking with the Hassan, I think we can use the technology very smartly in other ways, through chatbots, through the quick answering questions as well, through digital assessments as well. I think I was reading an article on the other day, and they were telling us that जो आपका onboarding का process है, you know, the time the candidate is not here, you can use the virtual reality, the VRs and ARs very effectively to show the people across the office that how it actually works, through adding different locations as well. So I think इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करके definitely the organization can add a lot of value into the system as well. Perfect. We just talked about clarity, personalized communication, constructive feedback. So, Ms. Maryam, what advice can you offer to leaders striving to create a work environment where employees are empowered to embrace change, drive innovation, and contribute to overall organizational success? I think we'll come to the same points that we discussed. The whole system हमारी organization का is dependent on communication, right communication. चाहे वो
आपकी रिक्रूटमेंट है, चाहे वो आप विद इन द टीम काम कर रहे हैं, चाहे वो आपका एग्जिट इंटरव्यू हो रहा है, चाहे वो आपका विजन मिशन स्टेटमेंट्स आप एम्प्लॉयज़ को आर्टिकुलेट कर रहे हैं, चाहे वो आप अपनी पॉलिसीज बना रहे हैं, द होल सिस्टम रन्स अराउंड द कम्युनिकेशन। मेरे ख्याल से एक तो आई पर्सनली बिलीव हमारे मैनेजर्स का टीयर एम्पावर होना बहुत ज़रूरी है। उनको इस चीज़ के लिए ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है कि उनके जो नीचे लोग काम कर रहे हैं उनकी ग्रोथ कैसे करवानी है, बोथ फाइनेंशली और उनके वर्क वाइज, लर्निंग वाइज, उनको कैसे ऊपर लेकर आना है। देन अगेन इफ़ यू आर इम्प्लीमेंटिंग एनी सॉर्ट ऑफ अ चेंज, आपको उनको ये बताना है कि ये क्यों ज़रूरी है, एंड कीप दैट विंडो लाइक हसन सेड कि फीडबैक्स सिर्फ आपने देने नहीं, आपने लेने भी हैं, बोथ साइड्स। कि आप फीडबैक दें कि ओके हियर यू गोइंग रॉन्ग एंड व्हाई एंड व्हाट यू कुड डू, यस, एंड इफ इट्स द अदर वे अराउंड दे शुड बी कंफर्टेबल इनफ टू कम टू यू टू टेल यू कि हम यहाँ गलत जा रहे हैं या आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस थिंग, हाउ अबाउट वी गो इन दिस डायरेक्शन, टेक सजेशंस। मतलब देयर इज नो हार्म अ जूनियर टेलिंग यू और सजेस्टिंग यू कि हम इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। मेरी टीम वंडरफुल आइडियाज देती है मुझे डेली बेसिस पे, एंड यू आर वन ऑफ देम। एंड वी I personally like this idea of having the, you know, the two-way feedback or 360 feedback. I love this idea. Open communication, they should be able to tell you कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, where we can improve, where we can be more productive, efficient. आपको आपकी टीम की लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईच आप लीड लेवल पे हैं, आप मैनेजर लेवल पे हैं, आप हेड लेवल पे हैं, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक इट वेरी पर्सनली। उनको उनके सीवीडी प्लान्स बनाने, टेक इट वेरी पर्सनली, उनको लेके चलें आगे, उनको अपना करियर पाथ, करियर लेटर दिखाएं, सो दैट इससे आपकी रिटेंशन भी बढ़ती है, इससे एम्प्लॉयज़ का ट्रस्ट भी ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ता है कि अच्छा दिस ऑर्गेनाइजेशन इज हेडेड इन दिस डायरेक्शन। आपके और आपके एम्प्लॉयज़ के गोल अलाइन होना बिकम वेरी ईजियर फॉर यू, आपको लेस एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। Apart from that, I think recognition is another thing we have to take in consideration कि अगर if somebody is putting in effort, somebody is वही idea कि अगर आपने experiment करने का किसी को दिया है and that they succeed in that, reward, recognition, चाहे verbally ही किसी को appreciate करना, that helps। आपको शायद ना पता चले लेकिन आपके जो नीचे काम कर रहे होते हैं, जो आपकी टीम होती है, उनके लिए दैट इज़ वंडरफुल डे जिस दिन आपके बॉस ने आपको कोई अच्छा कमेंट किया है या आपकी परफॉर्मेंस पे कोई अच्छा रिव्यू दिया है, वेल डन, यू हैव डन दिस वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स डे इन डे आउट जो आप कर रहे हैं। अगेन एक और चीज़ जो अभी हसन ने हाईलाइट की थी कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स से कुछ वर्क लाइफ बैलेंस is very very important. Unfortunately there is no 50-50% वाला वर्क लाइफ बैलेंस कि हाँ जी इतने परसेंट आप काम को देंगे, इतने परसेंट आप फैमिली को देंगे। एट टाइम्स 80% goes to work, 20% gets to the family. एट टाइम्स फैमिली को आप 90% दे रहे होते हो, काम Yeah. पे एट टाइम्स यू आर लाइक 10%। मतलब you have to give employees this sort of कि वो अपनी फैमिली, अपना काम इजीली ले लें और मेंटल हेल्थ भी उनकी जो पर्सनल लेवल पे उनकी ग्रोथ है। आई थिंक दैट्स प्रिटी मच इट जो मैं एडवाइस देना चाहूँगी कि बी डू नॉट बी अ बॉस, बी अ लीडर हु इज अमंग द पीपल। मतलब वो ऐसे नहीं कि ऊपर बैठा हुआ है हायरार्की में और ऑर्डर कर रहा है, बी अमंग द पीपल, take their viewpoints, share your ideas. Matlab, it should be inclusive, it should be collaborative effort, and then you'll see the results. Leaders Eat Last. There's a very good book on this. And so while doing this session, I've been joined by a couple of people who are listening to all of this at the other end, and they've been asking one question over and over again. And the question is exactly what is right communication? How do you define what is right and what is wrong in communication? And they actually want your perspective over this. Okay, what is right communication? Acha, I would like to simplify it. There is no communication right and wrong. Every communication is right, right?
what I believe communication for me is that if somebody who is sitting in front of me or he is not in front of me could understand what I meant to say, would be right communication or effective communication. So channel koi bhi ho, if it's not in person, then the organization should be fully equipped enough to use that level of technology where you can connect with that resource, if even the person is in suburbs, and you can communicate the persons well. I think वही communication सही है जो सही time पर हो, in my opinion as well. So if the communication is not been done at the right time, that communication is not effective as well. Doesn't matter how millions and dollars you have spent it on that technology and that level of communication, and how well written the document you've been crafted for. So I think, in my opinion, for being in inclusive leadership and a leader, you and we have to understand that communication has to be done at the right time. For example, change not easy for anybody. It has a lot of emotional up and down, and a lot of जैसे वो एक हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है, वैसे ही चेंज का भी प्रोसेस इज वेरी अप एंड डाउन, राइट? Sometimes emotionally very high, sometimes emotionally very low. There's a lot of pressure as well from the management and on the teams as well. So I think to take that, to take the people from very basic is very important, and take them along is very important. And वो simultaneously वो जो आपका channel of communication है ना, that keeps building on top of that as well. So rightly अगर आप लोगों को engage करेंगे, उनको अपने साथ उस decision का part बनाएंगे, उनको उस impact के बारे में बताएंगे जो उस change से आएगा, and take their input as well at that time before deciding and bringing and implementing the things across, would really help and bring that communication very effective and efficient, I believe. I would like to add, Wardah. Kanwal, I mean, बड़ा बेहतरीन बिल्कुल सही बताया हमने. अब मैं I was working with one company, उसमें I was working as a consultant, और हर दफा उनको ये प्रॉब्लम होता था कि यार कम्युनिकेशन के इश्यूज हैं, कम्युनिकेशन के मसाइल हैं, हमारे ये प्रॉब्लम आ रहा है, हमारा ये इशू आ रहा है. बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि उनको ये नहीं आइडिया था कि जो कम्युनिकेशन मैट्रिक्स है वो हमने किस तरह से बनाना है. सो what we did that हम लोगों ने उस organization में we have prepared a one communication matrix और वो बनाया, और उस communication matrix से हमने सारी उनकी जो मीटिंग्स थी उनकी थीम सेट की कि कौन सी मीटिंग्स जो है उसका थीम्स क्या होगा, मंथली अगर हम जो है रिव्यू रखेंगे वो क्या होगा, वीकली रिव्यू क्या होगा, स्टैंड अप मीटिंग्स में क्या करेंगे. तो व्हाट वी डिड दैट वी हैव डन प्रॉपर कम्युनिकेशन मैट्रिक्स बना के उसको उनको हमने एक पेपर दिया. हम डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी करते हैं सारे के सारे एचआर एंड ये वो, एंड नाउ प्रॉब्लम इज दैट इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने सारी चीजें बना के दे दी. इसलिए मैं कहता हूँ चाहे आप इंक्लूसिव लीडरशिप की बात करें, किसी चीज की बात करें, तो वन थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज लीडरशिप. जब लीडरशिप चाहेगी कि आप वो चेंज इंप्लीमेंट करें तो वो चेंज होगा. चेंज हमेशा टॉप टू बॉटम होता है. तो अगर आप डॉक्यूमेंट्स अच्छे बना लें, आप सारी चीजें अच्छी कर लें, देयर इज नो फॉलो अप इम्प्लीमेंटेशन प्लान आपका ना हो, तो फिर कम्युनिकेशन जो है वो आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे. तो मेरा ख्याल ये है कि जब भी आप इस तरह का कोई समझें कि आप कोई नई चीज लेकर आ रहे हैं जिससे एम्प्लॉइज को लग रहा हो क्या डिफिकल्ट है, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू हैव सम अवेयरनेस सेशंस फॉर देम. और जिन लोगों के लिए आप ये पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बना रहे हैं उनको कम्युनिकेट तो करें, उनसे पूछे तो सही कि ये वाकई ठीक है या नहीं है. क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि हम सारी चीजें लाके उनको बताते हैं कि ये पॉलिसी है, इसको तुम्हारे लिए हमने बनाया. भाई आप उससे पूछे तो सही तो उससे कंफर्टेबल है, यहाँ इसकी मतलब क्या इश्यूज है, तो मसले मसाइल आ सकते हो सकता है आप उसके कोई फीडबैक से आपको कोई अच्छी चीज मिल जाए, कोई बेहतरीन चीज मिल जाए. मैंने अपने करियर में जब करियर स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि जब हमने कोई भी चीज बगैर कम्युनिकेशन के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की तो हमें हमेशा वो गलत साबित हुई, और हमें वहां से जो है वो फायरबैक हुआ और हमें उल्टा जो है ना वो मार पड़ी वहां से. So whenever you need to implement anything, you need to do a lot of research, और जितने जो स्टेक होल्डर हैं उनको अपने साथ जरूर मिलाइए, क्योंकि उन्हीं के लिए जिनके लिए आप पॉलिसी बना रहे हैं उन्हीं के साथ ही कामयाबी जो है ना आपको. So we just talked about. Yes, Miss Maryam, you were about to say something. No, I was just about to add something on what Kanwal and Hassan has said. Okay, communication, right and wrong. Yes, we cannot
We cannot really segregate right and wrong communication क्या होती है. It's मेरे ख्याल से अगर आप एक टीम में एज अ लीडर काम करें या आप टीम में एक टीम का मेंबर भी काम करें, the main thing that you need to first do is to build those connections. जब आपके connections बन जाएंगे, आपकी communication 99% वैसे ही आसान हो जाएगी. When there's a connection, when you know there's a trust why you're doing what you're doing, it's easy to communicate. It is easy to show them कि हम कहाँ जा रहे हैं या why this is happening. Understanding भी इससे काफ़ी हद तक बढ़ जाती है आपकी, और perceive भी employees change को अच्छे तरीके से कर सकते हैं. So that's what I wanted to add quickly. So Thank you. we just talked about open communication, fostering relationships and the changing work environment. It's all about working from the office now. Work hours was flexible again. It's not strictly 9 to 5. It's not strictly office on. It's more work from home. So this question is for all three of you. What skills do you think are important for the future leaders to have sustainable organizations? We can start with Hassan. You. हाँ, सबसे पहले तो मुझे लगता है सबर का होना बड़ा जरूरी है भाई. आजकल जो हमारे लीडर्स हैं ना, बहुत जल्दी में है. वो चाहते हैं बंदा भी जल्दी हायर हो और बिजनेस भी जल्दी आ जाए और पैसे भी जल्दी आ जाए. आई एम सॉरी, फंड नहीं करना चाह रहा क्योंकि आई एम वर्किंग एज ए कंसल्टेंट. मैंने खैर कंसल्टेंसी भी करनी और इसी मार्केट में रहना है. तो आई एम जस्ट सेइंग दैट कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि सबर होना चाहिए. और दूसरा मुझे लगता है कि कहीं ना आपको स्ट्रेटेजिक लेवल की जो अप्रोच है ना वो रखनी चाहिए. आपको ये माइक्रो मैनेजमेंट से ना निकलना पड़ेगा. इन चीजों से आपको खत्म होना पड़ेगा. कौन कितने कप चाय पी रहा है, कौन मेरे खिलाफ बातें कर रहा है, कौन जो है आ रहा है, कौन जा रहा है, इवन कौन फेसबुक पे क्या लिख रहा है, लिंक्डइन पे क्या लिख रहा है, मेरी क्या रेटिंग आ रही है, मैं कितने स्टार्स चेक करूं. इन चीजों से आपको निकलना पड़ेगा. आप हमारे बड़ी कंपनी से एग्जाम्पल लें, जितने सीईओज हैं वो इन चीजों की तरफ फोकस नहीं करते बिकॉज दे डोंट हैव टाइम. आपको अपना प्रोडक्टिव टाइम बिजनेस डेवलपमेंट की तरफ लगाना है, सेल्स की तरफ लगाना है. आपने अपना ध्यान जो है वो उस साइड पे करना है. दुनिया कहती रहेगी जो आप मशहूर होते जाएंगे, आप वैल्यू ऐड करते जाएंगे, ये तो हो नहीं सकता कि दुश्मन और बाकी लोग आपके खिलाफ कंपैटिटर्स ना हो. तो वो तो डेफिनेटली बातें करेंगे, वो तो सारी चीजें चल रही रहेंगी. सो मेरे ख्याल में कि एक तो आप अपना ध्यान जो है इन चीजों से हटाएं और अपने काम पे फोकस करें, भरपूर फोकस करें, एक्सपेंशन की तरफ जाएं. ये चीजें देखिए, जिस तरह मैंने बताया कि सबर का होना बड़ा जरूरी है. स्ट्रेटजिक लेवल पे चीजों को देखना जरूरी है. माइक्रो मैनेजमेंट जो है ना वो छोड़ दें. और टीम बिल्डिंग, अपनी टीम जो है ना वो बनाए. टीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. राइट टीम राइट टाइम पे कौन से बंदे हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज अ किचन कैबिनेट. जिनके बगैर लीडर सीईओ नहीं चलता. वो कहते हैं यार कि मुझे ये 4-5 लोग जो हैं इनकी राय मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो उन्हीं की फीडबैक पे चीजें चल रही होती है, ड्राइव कर रही होती हैं. तो आपको ये देखना है बीइंग लीडर कि आपके जो लोग हैं एक तो वफादार हो और दूसरे कॉम्पिटेंट हो. अक्सर औकात मैं कई जगहों पे कहता हूँ कि कई दफा ये होता है कि कुछ चीजें मिल जाती है सीईओ को, तो वो कहते हैं यार कि लीडर को ये ठीक कह रहा है. ऐसे नहीं है, उसको वेरीफाई करना भी सीखें, देखना भी सीखें कि एक्चुअल में ऐसा क्या है जो वाकई चल रहा है. एंड कॉम्बिनेशन कॉम्पिटेंट और लॉयल, ये दो एम्प्लॉइज आपके लिए अगर एक किसी बंदे में मिल जाता है तो मैं समझता हूँ आपके लिए एज है, बोनस है. वरना अदरवाइज फिर आपको जो है ना वो इसमें से देखना पड़ेगा. और टेक में मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, वी आर सुपर टैलेंटेड. आर सीईओज बहुत ज्यादा टैलेंटेड है. एक चीज और, रिवर्स मेंटोरिंग. अपने जूनियर से सीखें भाई. जितना अच्छा आपको आपका जूनियर गाइड कर सकता है ना आजकल के दौर में, सीनियर नहीं गाइड कर सकता. मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ. सीनियर भी ठीक है, चीजें चल रही होंगी, हो रही होगी बेहतर, लेकिन क्योंकि देखिए जो आपका जूनियर है ना वो टेक सेवी है, उसको सारी चीजों का आइडिया है, चीजें चल रही होती है, तो यू नीड टू फोकस ऑन इट कि यार मैंने क्या करना है. यहाँ पर हम अना का बना लेते हैं ईगो. ओहो मैं जूनियर से पूछूंगा, मैं उससे बोलूंगा नहीं यार वो क्या सोचेगा, देखो मैं सीनियर हूँ और मैं जूनियर से आगे पूछ रहा हूँ. भाई ये जो टाइम है ना ये चेंज हो चुका है. आपका जो जूनियर है वो उसको ज्यादा पता है. मैं एग्जांपल दूंगा, मैं जब मेरा कोई 20 साल का एक्सपीरियंस है तो मुझे टेक्निकल रिक्रूटमेंट नहीं आती थी. तो मैंने टेक्निकल रिक्रूटमेंट जो है वो जिनका कम एक्सपीरियंस था और आईटी में उनका ज्यादा एक्सपीरियंस था, मैंने उनसे सीखी और वक्त के साथ साथ फिर मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया. फिर
I think being leader, you need to focus on continuous development. अपने ऊपर काम करें. काम खाली ये नहीं करें कि लीवाइस के कपड़े पहने, नाइकी के शूज पहने, एडिडास के ब्रांडेड कपड़े पहने. आप जो है इंटरनेशनल एक्सपोजर अपना लें, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस करें, अपने ऊपर जो है वो काम करें. क्योंकि देखें, जब आप ग्रो करते हैं तो आपको जो एक्सपोजर मिलता है वो बहुत अच्छा मिल रहा होता है. लेकिन जब आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव नहीं करते हैं, इवन अपनी डिग्री को भी आप इम्प्रूव नहीं करते हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते. क्यों? जब आप लोगों के साथ पढ़ेंगे, लोगों के साथ जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, तो आपको डिफरेंट एक्सपोजर मिलेगा, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिलेंगे. जिनके साथ आपने काम करना है नीचे, जो आपके सब ऑर्डिनेट्स हैं, बाय द वे वो आपसे ज्यादा फनकार हैं, और वो आइंदा से नीचे से बड़ी बड़ी चीजों को निकाल के ला सकते हैं. तो अगर आप अपनी स्किल्स पे और अपनी डिग्री पे काम करेंगे, तो मुझे ये लगता ये है कि आने वाले टाइम में आप जो है वो बहुत ग्रो करें. Miss Maryam, over to you. यस, आई थिंक हसन ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है प्रिटी मच सारी चीज़ें. आई वुड अग्री 110%. ये जो अभी ये लास्ट बात कर रहे थे कि अपने पे काम करें, यू हैव टू. अब वो ना टाइम नहीं रहा कि आपके पास एक स्किल है और आपके 10 साल गुजर जाएंगे. नहीं, स्पेशली इन द टेक इंडस्ट्री, you have to be very agile. Even if you're in the HR department, even if you're in sales, even if you are like the technical person in the tech industry, you have to be very very agile क्योंकि market बहुत जल्दी shift कर रही है. It's a rapid change and it is in a continuous change. हम लोग को accordingly उसके साथ साथ match करना है. If you want keep up the pace, we'll be left way behind. अपने आप को साथ साथ अपस्किल करना, आई कैन नॉट एम्फसाइज ऑन दिस इनफ. Certifications, whatever, there is a saying कि you don't work hard on your job, you work hard on yourself. जब आप अपने पे काम करते हैं, आपकी जॉब के रिजल्ट्स वैसे ही अच्छे होना शुरू हो जाते हैं. तो दैट्स वन थिंग. आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड कि जहाँ पे मुझे टेक्निकल स्किल्स चाहिए होती है ना, वहाँ पे आई वॉन्ट इंटरपर्सनल स्किल्स एज वेल. जो इंसान को हम ऑन बोर्ड कर रहे हैं या जो कंपनी के अंदर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग अमंग द टीम, उसकी एट टाइम्स देयर टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी होती है, बट एज अ पर्सन और एज अ टीम मेंबर यू आर जस्ट नॉट, मतलब गुड ना. आप कनेक्शंस बना रहे हैं, ना आप टीम को मोटिवेट रख पा रहे हैं, बल्कि आप डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, देन कंस्ट्रक्शन, यू नो. तो ऐसा इंसान भी सुटेबल नहीं है. आप यू कैन ऑलवेज enhance the technical skills, लेकिन जो interpersonal skills हैं, those are very 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 important. So I would say कि if I want to onboard somebody, if I would want to retain somebody, that would be a person जिसके interpersonal skills बहुत ज़्यादा strong हो, जो लोगों के साथ काम करना, जिसको टीम के साथ काम करना आता हो. और जो दूसरा उसका पाथ है टेक्निकल, दैट वी कैन एनहांस विद द टाइम. इट्स गुड टू हैव कि we get both the technical and the interpersonal skills there, but if they are good at technical, not interpersonal, so I would rather let them go. And if they are good at interpersonal and not so much on technical, I will still onboard them or help them enhance their skills. So yes, pretty much that's my idea कि what skills we need right now in this era, in this industry. Thank you. Jumping on to you, Miss Kanwal, if you have anything to add to this. Yeah, three quick bullets. Number one, I would say that what I have observed in my 14 years of career is that people are very good leaders, they are very good managers, but they prove their mettle when the crisis comes. So if you don't know how to manage the crisis, I think that's not the good definition of being an inclusive leader as well. So, in my humble opinion, I think if I'm not a good leader, if I would not be able to manage difficult situations, and I'll start blaming my team members on that perspective as well. So, quickly, I think crisis management needs to learn by the inclusive leaders for sure in this 2023 onwards. And number two is, I think, top of the line in my opinion as well, and that is emotional intelligence. If you are not emotionally intelligent,
to take care of your emotions and you are not able to know how to deal with them smartly, you are not an inclusive leader. So it's 2023 and you need to learn more than an IQ, that your emotional intelligence and stability is equally important for you and for the organization as well, even if, and more specifically if you are sitting at the HR. So in that perspective, I think emotional intelligence for you is very important. Bring a lot of solutions and manage the crisis is very important. And number three is collaborative mindset. So if you don't have that collaborative mindset, trust me, you are in disaster, your team will be in disaster, and at the end of the day, the organization will be working in silos as well. So these three top of the line, I think, skill sets is highly recommended from my side, for my own self as well, and I think for others who are listening me out there as well. Thank you. Thank you. With this, we'll wrap up our discussion. We talked about thriving in the new world, where we talked about open communication, adaptability, fostering relationships, and learning from not only the above, but people below you as well. And above all, never stop learning. Always be ready to learn a new thing, discover yourself. And as Hassan said, sabr and tawakkal above everything and anything else. With this, we'll wrap up our conversation. Thank you, everybody, for joining us. If you have a question, don't forget to comment below, and I'll make sure one of them gets back to you on this. To the panel, it's been an absolute honor to have all three of you. And with Thank this, you very much, Varda, for having us, and indeed it was great pleasure on our side as well, equally. Thank you. Mm. thank you. Very sweet of you. That's very sweet of all of you. And Allah Hafiz, and see you on the next episode of the CxO. Thank you and have a lovely day, everybody. Take care, Ji. Khuda Hafiz. Bye. I love this.